जय हिंद टू ऑल। आवर टुडे टॉपिक इज़ काउंटरिंग चाइना एट लैंड बॉर्डर। एक्चुअली हुआ क्या कि इंडिया और चाइना का जहाँ जहाँ पे भी लैंड बॉर्डर है वहाँ पे चाइना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप बहुत ज़्यादा हाई कर दी है। सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि चाइना ब्रिजेस बना रहा है, लैंड रोड बना रहा है, उसके रनवे बना रहा है ताकि जो चाइनीज़ एयरफोर्स है वो वहाँ पे उतर सके। तिब्बतीन प्लेट्यू हाई एल्टीट्यूड पे है, पहले वो एक प्रॉब्लम थी चाइना के लिए, लेकिन चाइना वो भी जो अपनी कैपेबिलिटी है वो भी बिल्डअप कर रहा है। सो एक जो बेलिजरेंट चाइना है, जो इंडो पैसिफिक में हमने उसका बेलिजरेंस देखा है, वो लैंड बॉर्डर पे कैसी एक्टिविटीज़ कर रहा है और इंडिया के लिए ये कैसा चैलेंज है वो हम डिस्कस करेंगे। सो with the rise of belligerent China and its increasing level of infrastructure buildup near India's border area, there is a need for India to enhance its infrastructure capability to deter China from pursuing any misadvantage along the LAC and to further develop its long-term strategy to contain China. Friends, if anybody has any doubt regarding LAC, LOC, border McMahon line, then he can ask me in the comment section. I will clear. Now come to the topic. What is the issue? The issue is China has been developing infrastructure along the LAC. The latest satellite images reveal that China was building a second bridge over the pangong. So this bridge can carry tanks and facilitate faster movement of military forces between north and south banks of the lake. Very clear. But what kind of infrastructure is being built by China? Actually Chinese has twin intention. First it's उसके एयरक्राफ्ट जो हैं वो लैंड हो जाने चाहिए बॉर्डर के नियर बाई, और दूसरा क्या है, वो हाइट पे ज़्यादा हाइट जो है तिब्बत की उसको उसके कैपेबल होना चाहिए। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरिया इज़ एम्ड एट एनहांसिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ चाइनीज एयरफोर्स एज अर्लियर इट हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरफील्ड्स इन द तिब्बतियन प्लेट्यू एंड problems of operating from high altitude were a severe handicap for the People Liberation Army Air Force. And after the Doklam incident, 37 airports and helicopter within Tibet and Xinjiang have been newly constructed or upgraded, of which at least 22 are identifiable as military or dual use facilities. इतनी ज़्यादा उसमें ये कर रहा है। और ड्यूल यूज़ क्या होता है? ड्यूल यूज़ फैसिलिटी वो होती है कि sorry, where both military and civilian applications are available, like the facilities like shelters for housing military aircrafts, facility to ensure the serviceability of the military aircrafts, एयर डिफेंस मिसाइल्स होने चाहिए, रनवे होने चाहिए, हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए, तो वो होती है ड्यूल। एंड आल्सो चाइना और भी बहुत कुछ कर रहा है, लाइक तिब्बत हाईवे दैट ग्रू फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड आल्सो हाई स्पीड रेल line connecting Lhasa and Naichigi entered service, covering the 435-kilometer distance in 2.5 hours. So basically, it wants to speed up the movement from its headquarters to the border. The next, the infrastructure that will be developed by China is a very it seems to be very major problem for India. How? The first is the China infrastructure buildup is aimed at reducing India's advantage in the employment of air power during a conflict along LAC, because हमारी साइड पे हाइट कम है, उनकी साइड पे तिब्बत के प्लेट्यूज़ की हाइट ज़्यादा है, तो हमारी एयरफोर्स उतनी कैपेबल है बट उनकी एयरफोर्स उतनी कैपेबल कम है उस हाइट पे, बट वो हमारी इस एडवांटेज को कम करना चाहता है। इट इज़ टू ओवरकम देयर शॉर्ट फास्ट न्यूट्रलाइजेस इंडियाज एयर पावर एज ओवर द तिब्बत एंड इंक्रीज PLA's combat capability for war fighting along LAC. And now what are the challenges for India? It would increase the PLA combat capability for war fighting along LAC. With the improved infrastructure in Tibet, China could quickly mobilize its troops on the border from its base. China would be able to neutralize India's air power edge over Tibet. And also, the Indian side have also responded very well. And how they have responded? The Indian army has redeployed significant number of soldiers force from Pakistan border to the northern front. A major push has been given to the infrastructure development, improving surveillance and construction of roads. After the 2020 standoff in eastern Ladakh, the government has sanctioned the construction of 32 roads along the LAC. But this is not sufficient. We need to do some more. What we have to build a deterrence, a long-term strategy. ठीक है, deterrence strategy that strengthen our army and that is based on the मतलब कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे हमें. इंडिया मस्ट फोकस ऑन कैपेबिलिटीज दैट सीक्स टू इम्पोज
punishing cost in the event of a conflict. अगर conflict हुआ तो चाइना डरनी चाहिए कि नहीं इंडिया से पंगा नहीं लेना है. Tactical thinking, apart from infrastructure development and troop deployment, which are necessary measures, there is a need for India to define a long-term military strategy. And also, हमें पता है हमारी एयर फोर्स, it is needed to ensure operational readiness and dominant role of air force in high altitude operation, as China doesn't have many forward bases. So India also need to develop the dominant naval position in the Indian Ocean. सो वही जब डोकलाम इंसिडेंट हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आएगी कि अगर डोकलाम में कुछ भी हुआ तो शिनजियांग तो नहीं रहेगा. सारी की सारी नेवी जो थी वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे जब लगा दी थी, तो उस नेवी का भी बहुत बड़ा मेजर रोल है टू काउंटर चाइना. गो बियॉन्ड द ट्रेडिशनल मेजर्स, कैपेबिलिटीज मस्ट बी डेवलप इन ऑल डोमेन्स टू इम्पोज कॉस्ट बियॉन्ड द इमीडिएट एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्रू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, साइबर वारफेयर, स्पेस वेपन्स, ट्रेड. So we have studied that what kind of infrastructure is being built by the China, like its second bridge and its roads, it's the improving capabilities of its air force. and China की intention क्या है? China की intention यही है कि faster movement of force की army की at the time of conflict from its base to the border. and what are the challenges for India? India के क्या challenges are? Obviously so many challenges for India. Already we have a challenges in the Indian Ocean. and what is the response from Indian side, like the construction of 32 roads and major deployment of the forces, and also the diplomatic talks are being going on. and what could be the way forward? Way forward is very important. The current way forward I don't think is much enough. Banning of the apps and hating China is another thing, but still the latest report, if you see, सबसे ज़्यादा सामान हमने चाइना से इंपोर्ट किया है. स्टिल चाइना इज़ ऑन द नंबर 1 and we, the government of India and India, is failed to find the alternative.